said by anthropologists that primitive man is less dash and more completely modeled by his dash than civilized man. क्या कहा गया है? इट इज कॉमनली सेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने कॉमनली ये बात कही है, जो प्रिमिटिव मैन है, जो पहले वाले जो ट्रेडिशनल आदमी है, जब पूरा वर्ल्ड क्या है सिविलाइज नहीं हुआ था उस टाइम से पहले, प्रिमिटिव मैन इज लेस इंडिविजुअल थे वो. क्लियर? इंडिविजुअली नहीं रहते थे, सोसाइटीज के बीच में रहते थे. लेस इंडिविजुअल एंड मोर कंप्लीटली मॉडल्ड बाय हिज सोसाइटी देन सिविलाइज्ड मैन. दिस कंटेन्स एंड डैश, एन के बाद ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा. तो हमारे पास इनफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड एलिमेंट. तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ. दिस कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ. सिंपलर सोसाइटीज आर मोर डैश. जो सिंपलर सोसाइटीज थी वो क्या थी? आर मोर डैश, मोर स्मॉलर. सिंपल सोसाइटी क्या थी? स्मॉलर सोसाइटीज थी. In the sense that they can call for and provide opportunities more uniform. Sorry, जो सिंपलर सोसाइटी थी, सिंपल सोसाइटी क्या थी? ज्यादा यूनिफॉर्म थी. यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी थी. क्लियर? फॉर अ फार डैश डाइवर्सिटी, स्मॉलर डाइवर्सिटी. क्योंकि उसके अंदर क्या थी? डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग होना. डाइवर्सिटी क्या थी? कम थी. स्मॉलर डाइवर्सिटी थी. और ज्यादा क्या थी? यूनिफॉर्म थी. सारी चीजें एक जैसी होती थी. Diversity of individual skills and occupations than the more complex and dash societies, advanced societies. Increasing individualization in the sense it is necessary product for modern advanced society and runs through all its activities from top to bottom. But it would be a serious error to set up an antithesis between this process of individualization and the growing strength and cohesion of society. सोसाइटी की स्ट्रेंथ और कोहेजन को बनाए रखने के लिए कहते जो ये प्रोसेस है किस चीज के बीच में? इंडिविजुअलाइजेशन के बीच में. कहते ये एक सीरियस एरर कई बार ले आती है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज लेस इंडिविजुअल बाय हिज सोसाइटी, एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, more uniform, far smaller, advanced societies. Exposure to gun violence makes adolescents twice as likely to perpetrate serious violence in the next 2 years. Exposure, gun violence. कहते जो adolescents में अगर exposure रहेगा gun violence का, आने वाले 2 सालों में क्या हो जाएगा? perpetrate serious violence में वो चीज convert हो जाएगी. According to a University of Michigan study. According to a University Michigan study, researchers found there is a dash cause, there is a substantial cause and dash between effect relationship between exposure and the perpetration of violence. Jeffrey B. Binghammer, a doctoral study of health behavior and health education, analyzed 5 years of data from adolescents living in 78 neighborhoods in Chicago. Binghammer is lead author of the paper in this week's journal Science. क्या कहा है उन्होंने? जो जेफरी है उन्होंने एनालाइज किया 5 इयर्स का डाटा और चेक किया जो एडोलसेंट है 78 नेबरहुड में जो शिकागो में रहते हैं, और उन्होंने चेक किया कि जो हेल्थ बिहेवियर है और हेल्थ एजुकेशन है उस चीज के ऊपर एक्सपोजर और परपेट्रेशन ऑफ वायलेंस का क्या असर होगा. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज as likely, Michigan study, substantial cause and effect relationship, the overall result of 2 or dash, 2 और हमने ऑप्शंस को भी नहीं देखा, जैसे आवाज आई ना एकदम से 2 और मोर, तो ये क्या होता है? कोलोकेशन होता है. हमारी प्रीवियस स्टडी ऐसे हमने सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं. 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. कहते हैं ओवरऑल रिजल्ट जब 2 और 2 से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, एक्ट किए जाते हैं, इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स. द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इज अ सिंगल फोर्स. कहते हैं जो रिजल्टेंट होता है 2 फोर्सेस का क्या आता है? उसका सिंगल फोर्स.
which has the same effect as the two forces combined. कहते जैसे ही सेम इफेक्ट आएगा, जैसे दो जो फोर्सेस है उनको कंबाइन किया जाएगा. कैसे आएगा? इफ टू फोर्सेस पुल एन ऑब्जेक्ट, अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में, द साइज ऑफ द रिजल्टेंट कैन बी फाउंड बाय डैश, बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, बाय सब्सट्रैक्टिंग वन फोर्स फ्रॉम द अदर इफ द फोर्स आर इक्वल. अगर फोर्स इक्वल है दे बैलेंस ईच अदर, तो वो बैलेंस करेंगे, दोनों में बैलेंस रहेगा. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज टू और मोर फोर्सेस, an object in opposite direction, an object in opposite directions by subtracting forces are equal. Climate dash the word we dash for the weather. Climate is the word we use for the weather. क्लाइमेट क्या है? वो वर्ड है जो हम वेदर के लिए यूज करते हैं लॉन्ग पीरियड में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड. द डेजर्ट हैज अ डैश क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट. यस, ड्राई क्लाइमेट बिकॉज देयर इज अ वेरी लिटिल रेन. द यूके हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट. यूके में कैसा टेम्परेट होता है? टेम्परामेंट कैसा होता है क्लाइमेट का? Which means the UK has a temperate climate. Temperate climate means कि वहां पे ना सर्दियां ज्यादा होती है और ना ही गर्मियां ज्यादा होती है. Which means winters are overall mild and summers generally don't get too hot. So our first answer is climate is we use a dry climate, very little rain, which means and summers generally don't get too hot. Psychology as a subject of study has largely developed in the West since the late 19th century. कहते साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लार्जली डेवलप किया गया लेट 19th सेंचुरी तक. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर हैज बीन एन एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक थिंकिंग. कहते पूरा एम्फेसिस किस चीज पे रहा? साइंटिफिक थिंकिंग के ऊपर. बिकॉज ऑफ दिस एम्फेसिस देयर हैव बीन मैनी साइंटिफिक स्टडीज इन साइकोलॉजी. बिकॉज ऑफ दिस एम्फेसिस, इस एम्फेसिस की वजह से क्या रहा? बहुत सारी जो साइंटिफिक स्टडीज है साइकोलॉजी के ऊपर ही हुई, which dash different aspects of human nature, which explore, जिन्होंने एक्सप्लोर किया different aspects of human nature. These include studies into how biology, physical factors influence human experience, how people use their senses, touch, taste, smell, sight and hearing to get to know the world, how people develop, why people behave in certain ways, how memory works, how people develop language, how people understand. Yes, how people understand and think about the world, which motivates people, why people have emotions and have personality develops. These scientific dash, yes, these है तो क्या आएगा? Plural. These scientific investigations all contribute to an understanding of human nature. So our first answer is which explore different aspects of human nature. People use their senses. How people understand these scientific investigations. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.